Bismillahirrahmanirrahim. Coffee with CEO. Another session with Babar Siddiqui, the CEO of Paragon Developers and the construction company. He's also the part of the YPO. He's a chapter president. And button not बड़ी इनके पास इनकी strengths हैं. USA में पैदा हुए, born हुए, वहीं develop किया और पाकिस्तान में आके पाकिस्तान is a land of opportunity. ये आज इनसे एक छोटी सी conversation है. बाबर सिद्दीकी साहब से बात करते हैं. पहली बात तो बहुत शुक्रिया बाबर. आपका कप ऑफ टी और कप ऑफ कॉफी. थैंक यू फॉर कमिंग. आपका मैं गोलवाला कर रहा हूँ. मुझे ये बताइए बाबर सिद्दीकी अपने बारे में क्या कहते हैं. प्लीज who define बाबर सिद्दीकी. Who is बाबर सिद्दीकी? Babar Siddiqui is your average person, okay, very down to earth, very fearful of what the world has given us. So you should always be very humble. क्योंकि जो हम्बलनेस है ना जी पाकिस्तान में बहुत जरूरत है. हम पाकिस्तानी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ दो चीजें डोमिनेट करती हैं, एक ईगो, एक जेलसी. बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना. आई मीन इट मेक्स नो सेंस. अल्लाह ने जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलेगा. और ईगो होल्ड्स नो वैल्यू. इट वोंट टेक यू लॉन्ग. वो कभी फास्ट ईगो राइट हो तो मानता भी है. उसमें लॉन्ग टर्म आपकी एक विजन, एक तो उसकी एक्सिक्यूशन नहीं होती ना. उसमें अगर ईगो आपकी आ जाती है सो इट स्टॉप्स, इट मेक्स अ हिंड्रेंस इन योर पाथ. ओके, मुझे ये बताइए कि एंटरप्रेन्योरशिप, यू आर माशाल्लाह एंटरप्रेन्योरशिप, थोड़ा सा मुझे बताएं ये डेवलप, ये जो पैरागन के बारे में क्या आपकी ज़हन में है, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, वेयर यू वांट टू स्केल अप. क्योंकि आज का जो नया जो बज़वर्ड है वो ग्रोथ के वाले से वो स्केल अप है. तो पैरागन का स्केल अप कहाँ देखते हैं, करंट कहाँ देखते हैं, और डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस ऑफ कोविड एंड बिफोर कोविड एंड पोस्ट कोविड, प्लीज. So alhamdulillah, the word you've used, scale up, right? So we use scale up and disruption. Yeah. So two main words. COVID mein alhamdulillah we didn't lay off one single person. We kept everyone on board. We didn't lay off one person. The vision behind Paragon started with our chairman, Siddiqui, and it's now being translated into the second generation. And the vision, the future vision, we've been in business for 30 years, mashallah, and we've scaled vertically, we've integrated vertically. So we've got Paragon Constructors, we have Lucky Paragon Ready Mix, which is a joint venture with Lucky Cement. We've got Paragon Developers, which is a developer of construction real estate projects. And so the vision now will be to, we have actually always been one step ahead of our competition. Mashallah. Competition's been very good, very friendly competition, never afraid of it, but we've always been one step ahead of ourselves. So we look into the future, we look into how we can enhance ourselves technologically, and what will make us different from everyone else. So that's what we're working on right now. What is this competitive edge? This competitive edge has always been using technology. I would focus on technology a lot. Not technology and equipment in our work in construction. So we are using what the rest of the world is using. Whereas in Pakistan, it's not. Conventional means and methods are being used in Pakistan. But why people don't invest in technology is because you don't really get the payback for that. So we don't worry about that. We don't worry about the payback. We want to set ourselves apart from everyone else. You are setting the benchmarks. Yeah, we're exceeding the benchmark. Yes, we are, and we're investing in that. We're investing in that, and we don't mind not getting paid back for it because we want to have an edge. Being a CEO, mashallah, being leading the company from the front, what are the key competencies? 3 competencies for a CEO to run the business, especially in crisis. You have to really be well managed and organized. You have to have a good team. Human resource in Pakistan especially plays a key role. You have to have biggest headache in Pakistan is having good human resource. Our work involves a big labor component. Construction involves a big labor component. Total companies may, how many people on the so we have we're operating in all of Pakistan, alhamdulillah. We have a head office in Karachi, an office in Islamabad. So we have about 8,000 people. 8,000 all over. Yeah. So human resource plays a critical role in any organization, and especially true for Pakistan, because we look at ourselves as an institute, right? We hire fresh graduates. And by the way, we are the only construction company, who is paying a fresh engineer a starting salary of 50,000. Wow. So we hire every year new batch of students.
We have a very good package for them. We have a growth ladder for them. How they can the career progression, and like I said, we look at ourselves as an institute. We don't mind training youngsters. Do you invest in people? Yeah, we invest in people, and they leave us because they like to use the name Paragon on their CV. So we don't mind. And they're branded as they're branded, yeah. So we don't mind, but as long as they find a good career and they get off to they get trained, and if they leave, they leave. Otherwise, we have a lot of cases where multiple cases where people have grown and now are at director level, general manager level. So there's we have case studies within Paragon, success stories. Wow. Yeah. We will capture these success stories in the future. Sir, what is entrepreneurship to you? Entrepreneurship is a broad term. I think this is hereditary. ये जीन्स में होता है, आपके पास एक ड्राइव होती है, नहीं किताब नहीं, ये ड्राइव है, इट्स अ ड्राइव टू जस्ट ड्राइव को पागलपन भी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं. अच्छा, इट्स नॉट मनी रिलेटेड, इट्स नॉट यू आर सीकिंग फाइनेंशियल बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस. इट्स जस्ट कि एक इंसान में एक ड्राइव होती है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है. अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, अच्छा भाई बताओ ये क्या है, बस यू वांट टू डू मल्टीपल थिंग्स, राइट, एंड मेक इट सक्सेसफुल. What is a part of jugaad in entrepreneurship? पाकिस्तान में जुगाड़ का लफ्ज काफी इस्तेमाल होता है. This is used in everyday part of our life. इंडियन ने किताब लिखी, हार्वर्ड में पढ़ाई जाती है. और बिल्कुल सही लिखी है. तो सर ये हमारा एवरीडे पार्ट ऑफ लाइफ है, चाहे वो पर्सनल काम में हो, चाहे वो प्रोफेशनल काम में हो. ये जुगाड़ इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ इन पाकिस्तान. कोविड ने ना बहुत जॉबलेसनेस क्रिएट किया. पाकिस्तान का नंबर 1 इश्यू उस वक्त जॉबलेसनेस है और इन्फ्लेशन है. ये दो चीजें. मुझे ये बताइए कि जॉब सीकर्स हम एमबीएस करके प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे, और जॉबलेस जो होती है ना, एक फौज बना दी है, आर्मी ऑफ जॉबलेस. हाउ वी कैन कन्वर्ट जॉब सीकर टू जॉब क्रिएटर्स? देखिए, कोविड में पाकिस्तान आई थिंक फेयर्ड बेटर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आई थिंक पाकिस्तान वाज अ बेनिफिशियरी ऑफ कोविड in terms of tourism, at least, right? Tourism economy spike कर गई है. और अगर आप देखें, डायरेक्ट इम्पैक्ट जो आया था एयरलाइंस को आया था, टिकटिंग वालों को आया था. बट इफ यू लुक एट द पास्ट 2 years, a lot of industries have grown. Textile has grown, financial sector has grown, IT has grown, pharma has grown, real estate construction has grown. So if you look at the numbers of these companies, they've actually done really well in the past 2 years. The profits, देख लें आप जो listed companies हैं, उनके आप statements देख लें, so they've done really well in these past 2 years. So I think COVID has been a blessing in disguise, but you're absolutely right. We have टैलेंट बियॉन्ड एनीथिंग इन दिस कंट्री. उस टैलेंट को बेचारे को मौका नहीं मिलता. हमारे यहाँ से क्यों सब लोग बाहर जा रहे हैं? ब्रेन ड्रेन हो रहे हैं. क्यों ब्रेन ड्रेन हो रहा है? व्हाई आर दे गोइंग सीकिंग अपॉर्चुनिटीज इन द मिडिल ईस्ट? फिर मिडिल ईस्ट से फिर वो चाहते हैं कि हम यूरोप, लंदन चले जाएं या कनाडा चले जाएं, यूएस चले जाएं. We need to create opportunities for our people. We need to. It goes back to HR. We need to fix our HR environment, and then this is a collective effort. This has to be done on public sector and private sector. Baba, when you hire a person, either entry level, either lateral level, what are the core companies look into HR? किस बात पे? क्योंकि CV में अक्सर exaggeration होती है. तो what competencies you look for? ये बड़ा important question है. इस सवाल से बड़े बच्चे यूनिवर्सिटीज के सीखेंगे. देखिए, हमारे काम में, I will refer to our work. Yes. You have to be a very good planner and you have to be very organized because every construction project is on a timeline. So you have to complete our strength. हमारी स्ट्रेंथ ये है, हम काम को टाइम से पहले कंप्लीट करते हैं, विद इन बजट करते हैं और क्वालिटी का काम करते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी क्वालिटी फोकस्ड, यू हैव टू बी वेरी टाइम फोकस्ड, यू हैव टू बी मैनेज्ड. सो दीज, देखिए, इंजीनियर तो बन के आ जाता है, लेकिन यू नीड टू ग्रूम हिम इनटू बिकमिंग अ बेटर मैनेजर. सो मैनेजरियल स्किल्स are very important. So वो आपको विजन देखने पड़ती है. You have to forecast के इस बंदे में वो चीज नजर आ रही है, नहीं आ रही है. Obviously ग्रूमिंग की जरूरत पड़ती है, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. एक लाइन में आपको डेडिकेट कर रहा हूँ, कहते हैं कि we are not poor in resources, we are poor in good managers. Excellent. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप.
बिल्कुल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, मैनेजमेंट की कमी नहीं। सर जब आपने डेडलाइन पूरी करनी होती है, बीइंग अ सीईओ, तो सीईओ जो होता है ना सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल पोजीशन पे हॉट सीट पे बैठता है। हाउ डू यू कोप विद द स्ट्रेस एंड एंजाइटी? बहुत सिचुएशंस आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड, वी हैव अ वेरी गुड टीम, तो वो स्ट्रेस जो है फिर डिस्पर्स हो जाता है। तो वी हैव अ वेरी गुड टीम। आप अपने पर्सनल लेवल पे क्या करते हैं? कोई जिम जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं? नहीं, मैं मैनेज करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को मैनेज करा हुआ। आई कैन मैनेज माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस। तो आई डोंट टेक, I think इसमें कोई टिप नहीं है इसमें। भाभी मैनेज करती नहीं, वो खुद she looks after our development side of the business. Actually, she stresses more in deadlines. Yes. Because she's a very organized person and she's very deadline oriented. I, on the other hand, I manage myself. I can somehow manage my stress. और मैं दूसरों को भी स्ट्रेस नहीं करता हूँ। गुस्सा आता है, एंगर, हाउ डू मैनेज एंगर? आ जाता है हमारे काम में। देखिए हमारे काम में लेबर कंपोनेंट बहुत है, लिटरेसी बहुत है, हमारा तो कमिटमेंट्स पूरे नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में क्या, हमारे मुल्क में झूठ बहुत है, बहुत झूठ है। हमारे सामने झूठ बोल रहा है, मुझे पता है वो झूठ बोल रहा है, तो झूठ बहुत है। बट यू कैन यूज टू, नॉट यूज टू, बट यू हैव टू अपने रिस्पॉन्सेस को हाँ अब कंट्रोल करना पड़ता है। देयर आर सम सिचुएशंस के हाँ कोई चीज बहुत गलत हो जाती है जिसमें फिर गुस्सा बहुत आता है। बाकी मुल्कों में सीईओ ने ना पंचिंग बैग रखे होते हैं, सर एंगर रिलीज बॉल्स होते हैं, रिलीज बैग होते हैं, वो पंचिंग हुआ होता है, हैंड हुआ होता है, गुस्सा होता है, नाम लिख के उसको पंच नहीं देखिए आता है वो परफॉर्मिंग इन सोसाइटी पर काफी चीजें गलत हो जाती हैं और गुस्सा भी निकल आता है, होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट वल्गर, गुस्सा हाई पिच आ जाती है at times, but vulgar abusive नहीं है। लेकिन no one will take abusiveness, तो वो आपको you have to understand कि कोई भी होए, you can't abuse anyone. You have to be assertive, not abusive. देखिए गुस्सा आता है, but you have to keep it in a professional manner. ठीक है। सर आपकी फेवरेट बुक you love to read? आप यूएसए से आए हैं, मैंने जिनकी पढ़ी यूएसए के राइटर्स की किताबें, any 2-3 books you recommend? Again, there's a variety of books. I mean, on the political side, Barack Obama की एक book थी. On the business side, entrepreneurship, leadership. You can. I've read Bill Gates' book. So there's a lot of case studies in history. People in different arenas who have, how they've managed their life, how they've grown. लेकिन before जो ना उसकी separation से पहले उसको मोड़ा आइडियल से। वो अब गड़बड़ हो गया। मेरे सियाटल आजकल Elon Musk has been so there's a variety of books. I mean, you just have to you can learn from everybody. मैं आपसे भी सीखूंगा. I can learn from anyone in my company, even my T-boy. I can learn something from him. So learning is a continuous process. It never ends, and there's no limit to it. And you can learn from every person in life. I mean, बेशक आपका बच्चा क्यों ना हो. Basically, learning attitude. Yes, it's a learning attitude. Or there are 3 attitudes we learn. Yeah. I think nobody can stop you. You are become unstoppable. Yeah. First is learning attitude. Yeah. Then is a service attitude. And third is attitude of gratitude. Absolutely. Sir, आखिरी 2-3 short points. आपकी अब तक की achievement you are proud of. You're really proud of Ijaz. बड़े काम किए, पैसे भी कमाए, पढ़ भी लिया. But this is my unique achievement. I think my unique achievement would have been when I moved from the US to Pakistan. Okay. And having that conversion in life. It's also difficult decision. Very difficult, and having that conversion in life because it's not easy. Yes. And it's a difficult. It was a difficult period, and like I told you before, you have to be very mentally strong to survive the storm. Once you've survived the storm, the sky is the limit, right? Oh. Or like I said, those are saturated markets. As a businessman, as an entrepreneur, I see tremendous opportunities, and Pakistan is a land of opportunities. So I see potential here. So that phase of my life was a very challenging phase, but alhamdulillah, I've survived and I've done well. MashaAllah. Yeah. Last 2 questions, sir. Your role model, your inspiration. From where do you get the inspirations? Apart from the religious, जो हमारे बिल्कुल जी बिल्कुल सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो इंसान की वालिद होते हैं. बिल्कुल. आपकी इंस्पिरेशन कौन है?
where you seek inspiration, when you feel low, you go, you man, or living inspiration, and you seek yourself as a mentor. You think he's my mentor. Everybody needs a mentor. So this question has 2-3 parts answer to it. Sure. एक तो हमारा मजहब है, जैसे आपने क्या हजूर पाक की एक वो है जो हमें बता के गए हैं, गाइडलाइंस, राइट. फिर मैं बहुत आपको एक जेनेरिक आंसर दूंगा. माय पेरेंट्स have always been my backbone in my success. My wife is very involved, and sometimes she critiques me in a very good way. Feedback जो है, Anam's critique helps me a lot. I can say my chairman Aftab Siddiqui Saab has been a role model. I've learned a lot from him. He's a very dedicated, honest and hardworking gentleman. So these are the key factors in my life, which I seek in the where I can go fall back on. And then in terms of role model, dunya wale role models hain. I can name plenty of them, but there's something to learn from everybody. And so, like I said, it's a learning process. MashaAllah. The last question: optimism about Pakistan. And the message for the young people, because Pakistan is a youth bulge, below 25 years, 65% population. Don't leave Pakistan. Like I said, this land is a land of opportunity. I can't comment on Fawad Chaudhary, but देखें पाकिस्तान की अपनी साइकिल है, ups and downs हैं. This is a very difficult country. We are strategically and geographically located in a very mushkil part of the world. We're a country where we have enemies as well, internal and external. But somehow or another, Allah Ta'ala का हाथ है इस मुल्क पे. And this country has survived, and it will survive. For the youngsters, don't leave this country. Establish your place here. Like I said, it's a land of opportunities. अगर यहाँ से talent निकल जाएगा, तो we won't be able to grow. We need manpower. We need growth, and there's tremendous amount of growth taking place right now. So I personally am very optimistic. My life philosophy has always been very optimistic. Whether it's corona, whether it's financial slump in the economy, whether it's government policies, or whether it's business decisions, I'm very optimistic. Last में कोई motivational कोई line, कोई quotation, closing line, इजाज़ ये मेरी बड़ी haunt करती है. सब लोग ना अपनी कमरे में inspirational कोई. There's four things I think everyone should key in on. Yes. You should always this is your recipe of mantra of success. Yeah. You should always strive to work hard in life. Be sincere in whatever you do. देखिए हम सब मेहनत करते हैं, लेबर भी मेहनत कर रही है, but you have to be very intelligent about how you work. Smart work and there's people who achieve their work in 8 hours. But there's people who stretch that to 12 hours. So you have to be very intelligent. And like I said, honesty plays a big impact in who you are. Don't take shortcuts in life. My message to youngsters is be patient, have perseverance, and your path will be created by Allah's will. So don't take shortcuts in life. Yeah. एक अमेरिकन जो आपको यूएसए से आए हैं, तो मैंने इनको बहुत राइटर्स को पढ़ा है. वो अपने बच्चों को ना बचपन से 2 चीज़ें सिखाते हैं. मैं तो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. मैं कहता हूँ यार ये अमेरिकन से कुछ सीखो. उनको पॉलिटिक्स छोड़ दें, वो साइड पे रखते हैं. नंबर 1, they teach their kids how to think big. पाकिस्तान में पहले तो छोटा पैटी माइंडेडनेस से जाती नहीं, पैटी माइंडेड है. और do it now. Your philosophy of life. Don't procrastinate. Don't delay. Do it now. And always have a big vision in life. Big picture होगी तो you'll able to achieve it. Do it now. Do it now. Absolutely. मतलब डॉट कर ले. Thank you. Thank you, sir. Really great. Thank you, sir. और मैं इसको क्लोजिंग करूंगा बाबर की ये लाइन को. तो पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट्स. एक बंदा मैंने बहुत लोग देखे जो पाकिस्तान से ओवरसीज
बाहर जाके डिफिकल्ट सिचुएशन में बाहर जाके आबाद हुए, और विलियम जैसे, अनिल मुशर्रफ जैसे बड़े लोग पाकिस्तान से उन्होंने अपना नाम भी कमाया, इज्जत भी कमाई। लेकिन वो लोग जो यूएसए छोड़ के पाकिस्तान आके काम कर रहे हैं, इट्स वन ऑफ द यूनिक सक्सेस जर्नी एंड द स्टोरी ऑफ बाय बाबर सिद्दीकी साहब। एंड वन की लाइन्स मैं इनको बार बार रिपीट कर रहा था कि मेंटली स्ट्रॉन्ग, मैं कहता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान में अपनी वो स्किल्स डेवलप कर लिए, तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गए, तो पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। नहीं तो आप स्ट्रॉन्गली मेंटल भी हैं। बिल्कुल। होपलेस या एंडलेस होप होगी अगर बाबर सिद्दीकी के फुटस्टेप को फॉलो करते हैं, नहीं तो एंडलेस होपलेस एंड होगा। और दूसरी सूरत में इम्पॉसिबल है, और लास्ट में आई एम पॉसिबल। इस सेशन को सीओ टुडे पे पेज पे जरूर देखिएगा। इजाज़त सर को इजाज़त देता हूं। थैंक यू।